given you an overview of what accounting basically does. Okay, so when we look in detail at the advantages, the first and foremost advantage is that through accounting, you are keeping a complete and systematic record of the business transactions that are taking place over a period of time. Now, this record is a verifiable record. You have supporting evidence for each of the entry made in accounts, and then this can be used as a proof for justification of whatever entries have been made. So this is complete and in a proper format. Second point, determination of selling price. So specifically अगर मैं बात करूँ तो cost accounting ये enable करता है, because cost accounting helps you keep a proper record of what has been the per unit cost of production, and you add your profit margin to the cost price to get the selling price. Okay. So through cost accounting, you get this value and then you keep a profit margin depending on the industry parameters in which you are working. Next is valuation of business. Now, accounting gives you a true picture of the business because it is through the balance sheet of the firm that you get to know what is the fair financial position. Okay, now balance sheet, if I use as a term, balance sheet is prepared at the end of financial year. End of financial year takes place on 31st March. So a balance sheet prepared on 31st March 2021 will show you how many assets and liabilities the firm is having. Okay, as on 31st March. So balance sheet is always prepared on the last day of the financial year. ओके, तो अब मैंने दो टर्म्स यूज करी हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज. वंस वी आर थ्रू विद दिस one and two topics which I'll cover first, and then I'll start taking up all the basic accounting terms which we will be using. So there I'll explain you assets and liabilities in detail. अभी के लिए आप ये समझ लो कि बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो पोजीशन बताती है फर्म की on the last day of the financial year. Next is helps in raising loan. Okay. Now, initially when you start with a business, ओनर के फंड्स, ओनर के पैसे से बिजनेस रन हो जाता है. बट जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड होता है, you need more funds. So it's not always easy for the owners to get additional funds. The firm might go for some borrowing from a bank in the form of a loan. Now, even if you approach a bank for a student loan, there are number of documents which are required. So when a business goes for raising a loan, the bank will again require a number of documents, and mainly what the bank sees is what has been the financial history of the firm, of the company. तो उसके लिए वो आपसे आपकी पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएंगे. So their accounts comes to your rescue. You have already prepared your accounting statements in a proper format. They have been cross-checked, verified. So this will act as a documentary proof when you approach bank for raising a loan. Then this documentary proof is also helpful in the court of law. So if there are any civil cases involved with respect to your business, okay, so there you can through your financial statements verify what have you actually done
There might also be some cases of fraud or tax evasion against the company. So the company, through the financial statements, can present a true picture of what has been the earnings and accordingly what should be the tax liability of the company. So it acts as an evidence in the court of law. Okay, then in compliance of law. So next advantage is that, as I told you, as per Companies Act 2013, every financial firm has to prepare a proper book of accounts, has to maintain a proper book of accounts. So for all this compliance to the laws, you are preparing a proper financial statement. You are keeping a record of all your previous financial statements. So you are moving legally. Okay. So if you are not doing that, then you are actually violating the specified laws. Then inter-firm and intra-firm comparison. This I have repeated a number of times. Inter-firm comparison is between different firms, while intra-firm comparison is comparison over the years for the same firm. So this all can be enabled when you have a proper record of all the financial transactions. Facilitates audit. Now, what is audit? Audit is a double check of all the financial statements that you have prepared. तो ये ऑडिटर क्या चेक करता है कि कुछ भी इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं होनी चाहिए when your books of accounts has been prepared. Okay, so there shouldn't be any window dressing, exaggerating, or underestimation. So all this is checked by an auditor. Okay, so when auditor starts working, he or she will need the accounting statements of the company. And then you have effective management. What do we mean by effective management? Management as a term means the art of managing others, getting work done through others. Okay. So how is accounting enabling effective management? हमने management accounting की बात करी है, internal decision making होती है, सारे departments कैसे work कर रहे हैं, कितनी efficiency से work कर रहे हैं, उस basis पे आप अपना future course of action decide करते हो. So all this enables effective handling of the day-to-day operations of the business. So we have talked all good about accounts, that accounts is helping you with a number of decisions in the business. But then again, as a concept, there are certain limitations to accounting. First and foremost, you derive from the definition of accounting itself that it is not considering non-monetary transactions. Okay, now as I told you, an event might be very crucial in the business environment, but if it cannot be interpreted in monetary terms, it will not be recorded in the books of accounts. Okay, second limitation is that accounting works on historical cost, that is cost of purchasing. Historical cost is the past cost. तो जो प्राइस चेंजेस हो रहे हैं वो अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं होते. ओके, इसका क्या मतलब है इजी टर्म्स में? अगर जैसे हम वही एग्जांपल लेते हैं, आपने कार परचेज करी, आपने 5 लाख की कार परचेज करी एंड दिस परचेज हैज टेकन प्लेस ऑन 2011-15. Okay,
Now when you record this transaction in the books of accounts, तो जो भी आपके assets होते हैं, जो भी आपके पास things of value होती है, उन पे हम depreciation लगाते हैं. Depreciation I told you yesterday also, it is a reduction in the value of an asset. Okay, now this may be due to normal wear and tear, replacement, technological obsolescence and so on. There can be a number of cases. तो आप इस कार की वैल्यू अपनी बुक्स में ऑन 2011-15 दिखा रहे हो 5 लाख. उसके बाद हर ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम year 14 to 15 you will start reducing the value of the asset. Okay, and this value reduction is by the amount of depreciation. तो से आप हर ईयर 10% कार की वैल्यू को राइट ऑफ कर रहे हो. तो पहले ईयर में डिपेंडिंग ऑन कितने नंबर ऑफ मंथ्स आपने यूज करा है कार को, आप 10% उस हिसाब से लगा के इसको माइनस कर दोगे. तो कैसे करते हैं? डेप्रिसिएशन है 10%. कार आपने से for understanding purposes I keep the date as 111. ओके, सो अब आपका डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए लगेगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च. ओके, तो इवन easier would be I'll take 110, तो उसमें 6 months का डेप्रिसिएशन आपका हो जाएगा. तो 612 into 5 lakh. This will give you the amount of depreciation. So which comes to 25,000 for half year of 2014-15. तो अब जब आप ये वैल्यू माइनस करते हो, इसका मतलब अगले साल 2015-16 में आपकी स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ दिस कार इज 2,25,000. Okay, this is also known as the written down value, reduced value post depreciation. So it is in accounts, it is known as written down value. Okay, तो अब आया 2,25,000. उसके बाद आप दोबारा इसको 10% से रिड्यूस करोगे. अब आप इस कार को पूरे ईयर यूज कर रहे हो. स्टार्टिंग ऑफ 2015 दैट इज 1st April 2015 टू 31st March 2016. तो अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी दैट इज 10% पर एनम. so that will be 22,500. so your written down value was at the starting of 16, now at the starting of 17. So this will be 2,02,500. Okay, this is how the value of the asset is reduced in the books of accounts. But what you have done is you always start with the original purchase price and you keep on reducing the value of asset. You never compare what is the actual value in the market right now. तो ये भी हो सकता है कि जब आपने फर्स्ट ईयर के बाद वैल्यू 2,25,000 लगाई, एक्चुअल मार्केट वैल्यू सिर्फ 1 लाख है इस कार की. Why? Because say the company has come with an updated model of this car and your model is now not fetching a good value. तो आप कभी भी एसेट की मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करते. आप सिर्फ हिस्टोरिकल जो परचेज प्राइस था उसको लेते हो और उसको हर साल रिड्यूस कर लेते हो. तो यू आर नॉट कीपिंग अ चेक ऑन व्हाट इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस. प्राइस चेंजेस आर नॉट कंसिडर्ड. तो मेनी अ टाइम्स दिस बिकम्स अ लिमिटेशन. अभी तो मैंने 2015 की कार की बात करी. से आपके दादाजी ने आपको कार दी है, आप उसको बिजनेस के लिए
वो आप रिड्यूस करी जा रहे हो, और अल्टीमेटली आपकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू है से वो अराउंड 100 रुपीज आ जाती है. बट वेन यू गो टू सेल दैट कार, इट इज फेचिंग यू अ वेरी गुड अमाउंट because it has become a vintage car now. Okay, so something like this shows that there is a lot of difference between value in books of accounts and the actual market value. But accounting is not considering all this. Okay, any question in this point? Okay, so Vyom has a question. We avoid them, बेटा in theory avoid हो जाता है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं उस हिसाब से डेप्रिसिएशन हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लगती है. बट यस, प्रैक्टिकली जब आप फेस करते हो रियल लाइफ सिचुएशन, तो इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू बताया. 1 लाख रुपीज सिचुएशन, कौन सी 1 लाख की बात करी बेटा मैंने? या यू आर फॉलोइंग अ प्रिंसिपल लॉ होगा. ओके, लॉ बोलो, प्रिंसिपल बोलो, रूल बोलो, दैट इज व्हाट वी आर फॉलोइंग. विकास, 1 लाख वाली कौन सी बेटा बात करी थी? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? ओके, यू आर सेइंग दिस रिटन डाउन वैल्यू जो, अच्छा. व्हेन आई सेड एक्चुअल वैल्यू इज 1 लाख, आपने बुक में जो रूल के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करी, आपकी 5 लाख की कार अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये बेटा यहाँ पे रुक जाओ, मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन ठीक नहीं करी. एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट कम्स टू 4,75,000. ओके, अभी आप ये यस वाले, मैम, आई वाज अबाउट टू से हाँ दिस ओनली, क्योंकि हाँ आपने वो ओके, 2 लाख लिख दिया था. हाँ हाँ, वो मैंने गलती से बेटा कर दिया. तो 4,75,000 है, ये आपकी बुक वैल्यू आ रही है. पर जब आप मार्केट में गए तो कार सिर्फ 1 लाख में सेल हो रही है. अब जब आप सेल करने जाते हो तो अलग फैक्टर्स कंसिडर होते हैं, कितना किलोमीटर्स कार रन हुई है, एंड देन अगेन क्या मॉडल है, क्या उसकी अभी मेंटेनेंस है कार की, देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स. So that shows that the car will fetch only 1 lakh because the company has come up with an updated version. Okay, so that discrepancy in reality might create a problem, but as per the rules given to us, we need to follow the historical cost and depreciate the value of the asset accordingly. Okay. So if ओके I मैम. make some mistakes like this, उसी time point out कर दिया करो, ठीक है? ओके ओके मैम. Okay, thank you. Okay, let's move ahead. Apart from that, what are the other limitations? Comparisons might become confusing because अगर आपकी कंपनी एक मेथड अडॉप्ट कर रही है और दूसरी फर्म कोई और मेथड अडॉप्ट कर रही है, तो आपस में कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है. ओके. Accounts also leaves some scope for personal judgment. Okay, so that might lead to subjectivity, जो कि हम नहीं चाहते अकाउंट्स में. पर बहुत सारी जो पॉलिसीज होती हैं उसमें ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो अकाउंटेंट के ऊपर होता है कि वो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करे. ओके. So recording and accounting for wages and labor is not carried out for different jobs processes. For the time being, I'll just add in this point that there are different processes which might take place in production of the final good. ओके, तो आप अलग अलग स्टेप्स पे जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, हम ओवरऑल कॉस्ट की बात करते हैं. तो वो बहुत बारी डिसीजन मेकिंग में
प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि हम डिसीजंस ऐसे भी लेते हैं कि हमने बाय करना है कंपोनेंट या उसको प्रोड्यूस करना है, तो उसमें हम उसकी कॉस्ट देखेंगे कि प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आ रही है कंपोनेंट की, पर उस पे कितना लेबर कॉस्ट चाहिए वो अलग से नहीं देखा जाता, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। ओके, लीफो एंड फीफो आर स्टॉक वैल्यूएशन, जो आपके पास रॉ मटेरियल रखा है या फिनिश गुड्स रखा है उसके वैल्यूएशन के लिए यूज होते हैं। फुल फॉर्म होता है लीफो का लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि दो अलग ऑल्टरनेटिव्स है, या तो फर्म लीफो यूज करेगी या फीफो यूज करेगी। तो जरूरी नहीं है कि आपकी फर्म लीफो यूज कर रही है तो आपका कॉम्पिटिटर भी लीफो यूज कर रहा है। ये मेथड यूज होता है टू वैल्यू द स्टॉक। ओके, वी हैव सर्टेन, या we'll be doing मानसी, जब अकाउंटिंग रेशियोज करेंगे हम, रेशियो एनालिसिस करेंगे, तो कंपैरिजन उसमें करना इजी हो जाता है। ओके, लेबर कॉस्ट इज पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, बट व्हाट आई एम सेइंग इन द लास्ट पॉइंट इज कि अलग अलग स्टेप्स पे कितनी लेबर कॉस्ट इनकर हुई है उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। ओके, लेबर कॉस्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, it is actually a direct cost for the firm. Any other question, anyone? Okay, so what we'll do is before we proceed with the accounting concepts, because that is the next topic, I'll start with the discussion of the basic terms in accounting. Okay, so these are the terms which we be using when we'll be doing practical also, and when we'll be talking about further theoretical concepts in accounts. So let us take each of the term one by one. First term which I keep using is a financial transaction. So as per the definition of accounting, you are considering only those transactions where money is involved, there is some exchange or transfer of value between two or more entities. तो परचेज हो रहा है गुड्स का तो मनी का फ्लो हो रहा है, सेल हो रहा है तो मनी का फ्लो हो रहा है, अमाउंट लेंट टू अनदर फर्म। ओके, आपस में एक फर्म ने दूसरी फर्म को कुछ फाइनेंशियल हेल्प करी है, कुछ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, खर्चे आपने पे करे हैं, receipt of commission or dividends etc. No, this is a new PPT, I'll share this. Okay, क्योंकि इसमें सिर्फ टर्म्स की बात है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा एज अ थ्योरी कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो आई विल शेयर दिस पीपीटी आल्सो। Okay, now all these examples, they involve some financial exchange. Okay, commission term, as a term, I hope everyone knows what commission is. The income you are making on every sale of a unit of production. ओके, एंड देन डिविडेंड्स, डिविडेंड्स क्या होता है, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो शेयर से जो आपको रिटर्न मिलता है एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर, उस रिटर्न को हम कैश नहीं बोलते, उस रिटर्न को हम इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में जो रेगुलर इनकम आपको कंपनी देती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट is that a transaction might be a credit transaction or a cash transaction. क्रेडिट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, जिसमें इमीडिएट कैश रिसीव नहीं होता, जो आपको उधार पे मिला है गुड, या जो परचेजेस आपने करी है या आपने सेल भी करी है, आपको कस्टमर ने अभी पैसा नहीं दिया,
तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं, जहां पर इमिडिएटली कैश, आपको कैश रिसीव हो जाएगा, दैट विल बी अ कैश ट्रांजैक्शन. ओके. आफ्टर दैट, नेक्स्ट term used is capital. What do we mean by capital? Capital is the amount invested by the owner. Okay, the one who starts the business. जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है और जब वो उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, वो आपका कैपिटल होता है. कैपिटल ना सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है, पर वो थिंग्स ऑफ वैल्यू भी हो सकता है. जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आप फर्नीचर लाए बिजनेस के लिए, आप कैश लाए बिजनेस के लिए, और आप से एसीज लाए अपने बिजनेस के लिए, एयर कंडीशनिंग लाए, तो एयर कंडीशनर लाए. तो ये सब थिंग्स ऑफ वैल्यू है, ना सिर्फ कैश, बट जो आप एसी और फर्नीचर लाए हो, दैट इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ वैल्यू फॉर द बिजनेस. ऑल दिस विल कम अंडर द टर्म कैपिटल. It indicates interest of owners in the assets of the enterprise. इसका क्या मतलब है? दो इन्वेस्टर्स हैं, दो ओनर्स हैं, ए एंड बी. जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, तब ए 6 लाख का कैश लाया और बी 4 लाख का कैश लाया. So this is a total amount of 10 lakh. Now when 6 lakh and 4 lakh is the ratio of funds that have been brought in. This means that their interest, A का interest अब business में is up to 60%, unless and until it is explicitly agreed that there is some other ratio. Their financial interest will be 60 to 40. That is 3 is to 2 की ratio में. Because that depends on how much funds, how much capital has been brought in by the owners. Okay. तो जब भी बिजनेस ग्रो होगा, जब भी बिजनेस आगे एक्सपैंड होगा, वाइंड अप होगा, इनिशियल कैपिटल जो रेशियो है वो कंसिडर होती है. Okay, so in that sense, it indicates the interest of owners in the asset of the enterprise. Okay, so I am using the term asset again and again. Let's first discuss what assets are. As per the definition, assets are economic resources of an enterprise, things of value owned, which will help firm earn money in the future. Those are known as assets. Now, assets can be tangible or they can be intangible. Tangible is something which we can see, which we can feel, which we can touch. Intangible does not uh, have these characteristics. ठीक है. अब tangible assets क्या होंगे? आप यहाँ पे देखो. Cash is a tangible asset. You can see it. Bank balance is a tangible asset. Inventory. What do you mean by inventory? Inventory is stock. स्टॉक में क्या क्या आता है? स्टॉक में आता है आपका रॉ मटेरियल. आप टेबल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हो, टेबल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए वुड आपका मेन रॉ मटेरियल है, ये स्टॉक का पार्ट है. फिर WIP. WIP is work in progress. ओके, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है कि आप टेबल मैन्युफैक्चरिंग में हो, आधा टेबल बना है, तो ये वर्क आपका क्या है? प्रोग्रेस में है. इसको WIP बोलते हैं. और लास्ट एलिमेंट होता है फिनिश्ड गुड्स. टेबल्स आपने मैन्युफैक्चर कर लिए, अभी ये सेल नहीं हुए हैं, तो सेल से पहले ये फिनिश्ड गुड्स आपके स्टॉक का पार्ट होते हैं या आपकी इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं. इन तीनों टर्म्स को ऐड करके आपको अपने स्टॉक की वैल्यू पता चलती है. वाई इज इट अ थिंग ऑफ वैल्यू ओन्ड? क्योंकि कल को
जब फिनिश्ड गुड्स सेल होंगे मार्केट में तो बिजनेस को उससे इनकम मिलेगी. सो दिस इज एन इकोनॉमिक रिसोर्स फॉर द बिजनेस. Okay, I hope this is clear. Then other examples of tangible assets are machine, furniture and building. Okay, और भी हो सकते हैं. तो आपकी जो डिलीवरी की व्हीकल्स हैं, कार है, ट्रक है, वो सब भी आपके एसेट्स में आ सकते हैं. ओके. आफ्टर दैट, second category of assets are intangible in nature, something which cannot be seen. Okay, but again it has value for the business. उसमें सबसे पहले सबसे important intangible asset होता है goodwill. Goodwill is the reputation that the company has built over the years. So this has a monetary value for the firm, क्योंकि जिस फर्म की गुडविल होती है मार्केट में उसको सेल्स करने में ईज होती है. ओके. ऐसी फर्म न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो कस्टमर्स उसके लिए ज्यादा रिसेप्टिव होंगे, जल्दी परचेज करेंगे क्योंकि उनको उस कंपनी पे भरोसा है. उसका एक ब्रांड नेम है मार्केट में, एक रेप्यूटेशन है. So that is an intangible asset for the firm. Okay, after that there are three terms used for intangible asset: patents, copyrights, trademarks. Can anyone try and tell me what is the meaning of a patent or a copyright or a trademark? टर्म्स आपने सुने हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली सुने होंगे ये टर्म्स, पर इनमें डिफरेंस होता है. तीनों ही इंटैंजिबल एसेट्स हैं. Patent generally is a uh, intangible asset which is basically your, yes, legal right. Yes, you're right, Sahil, on a new invention or a new technology. Okay, so IT industry में, pharmaceutical में पेटेंट्स आपका इंटेंजिबल एसेट होता है. अगर किसी और फर्म ने आपकी टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो वो उसके लिए पे करेगा, वो आपका पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए पेमेंट करेगा. ओके. सो अभी जब हम बात कर रहे हैं, when we are talking about corona times, then there has been a request by many underdeveloped economies कि जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन बन रही है कोरोना की, दैट शुडंट बी पेटेंटेड. बस अगर पेटेंट हो जाती है कोई मेडिसिन तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है. ओके. और जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं जो पेटेंटेड नहीं होते उनकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती है. ओके. नेक्स्ट इज कॉपीराइट. Copyright is for literary work, musical work. तो आप बहुत बड़ी अपनी बुक्स ओपन करते हो और उसमें फर्स्ट या सेकंड पेज पे दिया होता है, नो पार्ट ऑफ दिस बुक शुड बी यूज विदाउट द approval of the author, or you're not allowed to photocopy this book or something like that. क्योंकि जो भी अकेडमिक वर्क होता है जिस भी ऑथर के नाम पे रजिस्टर्ड है उसकी कॉपीराइट होती है उस पे. ओके. अगर कोई आपकी लिखी हुई बुक से कुछ पोर्शन यूज करना चाहे तो देन ही और शी विल हैव टू पे यू द प्रॉपर पेमेंट फॉर दैट, प्रॉपर अमाउंट फॉर दैट. सिमिलरली जो सॉन्ग्स होते हैं, जो म्यूजिकल क्रिएशंस होती हैं, दे एक्सक्लूसिवली बिलोंग टू द क्रिएटर. If anyone wants to make a commercial use of the same, then payment has to be made. And last term is trademark. Trademark is used for logo or sign of a particular company. तो जब आप एप्पल का लोगो देखते हो
या आप नेस्ले का लोगो देखते हो, बर्ड है, HUL का लोगो है, यू साइन जो होता है, दे बिलोंग, यस, दैट सिंबल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंपनी, so that is exclusive right of that company. You cannot use their trademark without their permission. Okay, so tangible assets can be seen, intangible assets cannot be seen. Okay, yes, symbol or sign is used to distinguish between brands. Okay, a further classification. Now this was just to explain you कि बहुत types of asset हो सकते हैं, पर जब हम business में बात करते हैं, accounting में बात करते हैं, तो हम दो broad categories की बात करते हैं. एक होते हैं fixed assets और एक होते हैं current assets. Fixed होते हैं आपके long term assets और current assets होते हैं short term. So what I'll do is, it's almost time. I'll stop here.